welcome to this momentous occasion, ASPI Con 2023 inauguration. I am Suchitra Kumari, PV Associate. I'm Khushbu, PhD scholar. We are delighted to have you all here today. We will now embark on a beautiful journey of research and innovation. It's an honor to have very distinguished personality with us who have contributed significantly in the field of pharmacology, and their presence truly adds to the brilliance of this occasion. To commence the event, I would like to invite our esteemed guests to join us on the stage. Please give a huge round of applause for our chief guest and inaugurator, Professor Dr. Y.K. Gupta, President AIMS Jammu, former President AIMS New Delhi and AIMS Bhopal. Dr. Hitesh Mishra sir is requested to accompany him to the stage. I would like to invite our guest of honor, Professor Dr. Ashutosh Vishwas sir, Executive Director, AIMS Bhubaneswar, ex-director cum Vice Chancellor, IGIMS Patna. I would like to invite our patron-in-chief, Professor Dr. Binde Kumar, Director cum Vice Chancellor, IGIMS Patna. Now I'd like to invite President, IPS Bihar Chapter, Professor Dr. Kumari Indu Sinha ma'am. I would like to invite Dean Academic, IGMS Patna, Professor Dr. VM Dayal sir. Now I'd like to invite Deputy Director, IGMS Patna, Professor Dr. Manish Mandal sir. I would like to invite our Principal, IGMS Patna, Professor Dr. Ranjit Guha sir. Now I'd like to invite our special guest, Dean Naipar Hajipur, Dr. Vipin Kumar Parihar. I would like to invite our organizing chairman, ASPI, Con 2023, founder president, ASPI, General Secretary, IPS, Bihar State Branch, Professor Dr. Hariyar Dikshit. Now I'd like to invite Vice President and Organizing Secretary of ASPI Con 2023, Professor Dr. Lalit Mohan sir. Thank you, guest, by offering bouquet. Please join me in giving them a round of applause. Professor Dr. Y.K. Gupta sir. Professor Dr. Ashutosh Vishwas sir. Professor Dr. Binde Kumar. Professor Dr. Kumari Indu Sinha ma'am. Professor Dr. VM Dayal sir. Okay, he is not here. Professor Dr. Manish Mandal sir. Dr. Vipin Kumar Parihar. Professor Dr. Hariyar Dikshit sir.
Professor Dr. Lalit Mohan. Please join me in welcoming to the stage a brilliant academician, a dedicated mentor, and a beacon of knowledge, Professor Dr. Hariyat Dikshit sir, organizing chairman of ASPICon 2023. Sir, please grace us with your warm words of welcome. नमस्कार सबों को इस संध्या की शुभकामना और आप सबों को तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। तो ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर वाई के गुप्ता सर, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर आशुतोष विश्वास सर, पैट्रन इन चीफ कम डायरेक्टर प्रोफेसर विंदे कुमार जी, प्रेसिडेंट IPS बिहार स्टेट branch Professor Kumari Indu madam, principal is coming, young and dynamic Deputy Director Administration Manish Mandal ji, Dean Naiper Dr. Vipin Kumar Parihar ji, my organizing secretary Lalit Mohan ji, राजेश जी, संतोष जी, अशोक जी, अरविंद बाबू, ओम जी, उदय बाबू, जितेंद्र बाबू, देवाशीष होता जी, हितेश शर्मा साहब, RN शर्मा सर, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर विकास, डॉक्टर रानी, इंडियन IMA के इमीडिएट पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, Dr. Vijay ji, and all the delegates, participants, resource persons, representative from press and media. It is my honor to welcome all on behalf of the organizing committee and from myself on this historical moment of first inaugural conference of Academic Society of Pharmacologists of IGMS. In short, it is known as ASPI. Sir, Professor Y.K. Gupta sir, you are a master communicator, great pharmacologist, and inspiration for every pharmacologist. यह मेरा सौभाग्य की बात है कि जब भी आपको मैंने बुलाया, पिछले 12 साल का यहाँ का जो जर्नी है उसमें 3 बार आप सर आए हैं यहाँ, और उस समय जो ओल्ड बिल्डिंग में फार्माकोलॉजी था वहाँ भी विजिट किया है इन्होंने, और हर समय हमारे लिए तो इंस्पिरेशन है। और जिस सहजता से आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है, मैं बहुत ही इसके लिए आभारी रहूँगा। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ which ASPI is established to promote departmental advancement, research, education, and training in clinical pharmacology, preclinical studies, and collaborate and cooperate with other organizations of similar interest, nationally as well as internationally. Sir, with your blessing, the seedling of ASPI will definitely grow as a Bodhi Briksh as at Bodh Gaya. हमने इसके लोगो में भी रखा है उसका जो पिक्चर है बोध गया का, ज्ञान वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको समाहित किया है अपने लोगों में। और आशा करते हैं कि आप लोगों के शुभकामनाओं और आशीर्वाद से ये ग्रो करेगा। मेरा मूल मंत्र है जीवन का चरैवैती चरैवैती, बढ़ते रहो, चलते रहो। ये हम चाहेंगे कि ASPI भी उसी तरह से ग्रो करे विथ कोलैबोरेशन अदर पीपल ऑल्सो। दैट्स वाई आज का पूरा आप प्रोग्राम भी देखेंगे तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व किया है, हम फिजिशियंस को भी कर रहे हैं, हम कैंसर स्पेशलिस्ट को भी कर रहे हैं, हम रिसर्चर्स को भी कर रहे हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी को, यानी डाइवर्सिफाइड। सो आप सबों के आशीर्वाद से ये ग्रो करेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर
Professor Ashutosh Biswas sir, presently he is Executive Director एम्स भुवनेश्वर। बहुत ही कम समय के कार्यकाल में आपने आईजीएमएस अस्पताल के पेशेंट केयर को खास करके मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा सुधार किया है और बहुत सरलता से सबों की बात ध्यान से सुनते थे। इट वाज मार्वेलस जर्नी एट योर एट आईजीएमएस। और एक चीज़ मैं इनका ये अप्रिशिएट करता हूँ जो बराबर हिज वर्क एंड साइलेंस इज स्पीक मोर। मैं पहले भी सर को बोला हूँ और आज भी उसको रिपीट करता हूँ, बोलते कम हैं, काम ज़्यादा करते हैं। और इनका वो काम और साइलेंस ये बहुत प्रभावशाली था। आप इतनी व्यस्तता के बावजूद भी सर आए, भुवनेश्वर से दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा सर। आवर डायनेमिक पैट्रन इन चीफ एंड डायरेक्टर कम वाइस चांसलर आईजीएमएस प्रोफेसर विंदे कुमार जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं विंदे जी। आज जो एकेडमिक सोसाइटी ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट ऑफ आईजीएमएस का गठन संभव हुआ है उसके फॉर्मल इन्होंने ही परमिशन दिया है। एक्चुअली विधिवत जिसको कहते हैं वृक्षारोपण, ये वृक्षारोपण का सौभाग्य विंदे जी के थ्रू ही हुआ है, हमारे डायरेक्टर। और चुपचाप इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी चुपचाप कैसे मदद किया जाता है जिसकी कोई जानकारी मुझे नहीं है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं हमारे नज़र में कि मैं सोच रहा हूं कि इसका क्या किया जाए, उसके पहले, मेरे सोचने से पहले इनका उसका सॉल्यूशन चला आता है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैं इसके लिए भी आपका बहुत आभारी रहूँगा। उम्मीद करता हूं कि जो ये वृक्षारोपण किया गया है वो आपके मार्गदर्शन में ये और ग्रो करे। So I would like to welcome Professor Kumari Indu Sinha, Patron and President IPS Bihar State Branch, Principal Ranjit Guha, he is coming. आ गए? आप आ गए? मैं तो समझा था इनको, मैंने कहा यंग एंड डायनेमिक, हर समय अपने पंजे पर चलते रहने वाले मनीष मंडल जी, नाइपर के डीन डॉक्टर विपिन कुमार परिहार जी, आप सबों को और जितने भी ऑडियंस में बैठे हुए हैं, डॉक्टर जयंत हैं, डॉक्टर दीपक हैं, डॉक्टर ललन हैं, हम जियाउर हैं, हम सबको नाम नहीं ले पाए, डॉक्टर ए.के. शर्मा जी हैं, डॉक्टर सुधीर जी हैं, मीरा मैडम, निर्मला मैडम, डॉक्टर बद्याल, सबों को हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप आए उसके लिए मैं बराबर आभारी रहूँगा। धन्यवाद। We have our principal, Professor Dr. Ranjit Guha sir. I request Suchitra please offer a bouquet to him. Now it's time to have a lamp lighting session. The lamp that we are about to light signifies not only the light of knowledge but also the hope that burns within us to make this world a better place. To commence this lamp lighting ceremony, may I request to our chief guest and all dignitaries to kindly light the lamp. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। I request our chief guest and inaugurator and all the dignitaries to kindly release the souvenir. Thank you, sir. Our event would not be completed without the valuable insight from our esteemed guests who are here to share their expertise and knowledge. First, we are delighted to introduce our guest, special guest, Professor Dr. Vipin Kumar Parihar, Associate Professor and Dean, Chief Vigilance Officer, Naipur, Hajipur. He was awarded by earlier Career Investigator Award by the Radiation Research Society USA in consequently 3 years. I would request sir to come to the dais and say a few words. Thank you, sir. Shri Y.K. Gupta ji, the chief guest for this event, and the guest of eminence, Shri Astos ji, Viswas ji, and the director, IGMS, Binde Singh ji, the Dr. Mandals, and the other dignitaries on the dais. So it was great pleasure. Since morning, we have witnessed the brainstorming session in the pharmacology. It's a complete mixture of both basic and translational research. As you can see, every speaker was an eminent. In the beginning, we have seen the basic research science, how the India basically needs the need of Indian scenario, and then is transformed into the clinical science. The speaker was selected was one of the what is need of time. We have seen the topic of these themes, the precision medicines. It is today's needs for the India. As we've seen that we have a lot of diversities in India. So one medicine doesn't work for everyone. That's why that we have completely focusing just like a genotyping and other translational research, more precise genes. So that's been more just like specifying the every side effects of medicines. Further, the other topics we have seen in the how the community medicine is going to help in India. So I can just like taking no much of time. I can say this is a complete mixture. And yesterday we have a pre-workshop conference on Naipur Hajipur. So where I am very delighted, a lot of motivated doctors and clinicians have visited Naipur Hajipur. So we have exposed the most of the scientists from the LCHRM's technology. They can we also have the how we can completely do the proteomic studies, what type of protein change in the drugs. Then we have another instrument, will ICPMS, any type of toxicity of heavy metal can be done. Right now with the collaboration of the AIMS, collaboration of IGMS, we are running a series of projects where our scientists are involved on the basic science, where we give the complete information to the IGMS doctors.
and we are getting a lot of clinical samples. That's why the science is incomplete when the clinicians or basic research is incomplete when the clinical doctors come with the basic scientists. And that's why we find a gap and we try to fill this gap. That's why I'm not getting too much of time. I thank you all these organizers very much, and also thank you very much. Thank you, madam. Thank you, sir, for your kind words. Our next distinguished guest who showcased not only his accomplishment but also his humanity and kindness. His ability to connect with the student from all work of his life reflect his genuine nature and approachable demeanor. Please welcome Professor Dr. Ranjit Guha, sir, Principal, IJMS Patna, Professor of Anatomy, Dean of Student Welfare. Good evening, all. So, our chief guest, Y.K. Gupta sir, the stalwart, the legend, the icon, and the idol. Professor Ashutosh Vishwa sir, our ex-director and present director of AIMS Bhubaneswar, another icon in his fraternity. Professor Bindi Kumar sir, our current director, who is the main motivator and guide for all of our programs and everything which is running. And Madam is there present, our Manish Mandalji, Lalit, and Sir Bipin sir, and Hariyar Dikshit sir, and so many stalwarts, senior professors, whom to name because so many are present here. They are really a galaxy of stalwarts and a hallowed gathering. And one of my very young and fast friend is present in the front row only. His name is Professor R.N. Sharma. So he is evergreen and jolly and is very much fast friend. Similarly, Udaiva, who is there, our founder principal of the medical college. So all the students, all the dignitaries, participants, ladies and gentlemen, I am really honored, humbled and privileged to be a part of this wonderful inaugural ceremony. On the auspicious occasion of the first conference in the national level conference of the society formed by the pharmacologists of this institute, but which has gone beyond the horizon and brought the national and international eminent erudite and esteemed pharmacologists. And this type of CME, I know this type of conference, particularly with which is a mixture of online, offline, hybrid mode, and also having decorated and ornamented by a beautiful hands-on pre-conference both here in Naipar Hajipur, and then the main conference, continuous intense academic activities and scholastic discussions throughout. This gives a platform to exchange our thoughts and ideas, to share our visions, and also to update ourselves and to keep ourselves abreast with the recent updates, so that these are always become very much beneficial for the institute, for the departments organizing part, and for all the participants and delegates, because we can hear to the stalwarts, to the iconic figures of these fields and fraternity, which we have already heard, and tomorrow is also the final day. Is there a lot of more deliberations will be there. So naturally you can understand, to organize an event of such a magnitude is a mammoth task. So it is a Herculean task, and to make it successful, support from the administration is very important, and that we are very fortunate that we are having my elder brother and our current director, Professor Bindi Kumar sir, which is always there to say yes only. No question of no. Only yes, go ahead, I am there. Whatever problem, I will look after. So if you are having a director like this, who himself is so knowledgeable, so visionary, and so much a performer also by himself, and always behind us, and then the entire pharmacology team spearheaded by Hariyar Dikshit sir, the contribution of Hariyar Dikshit sir in establishing the department from the scratch, not only department, in the medical college, what we are seeing now, from Dr. Uday Kumar sir, Dr. Hariyar Dikshit sir, Ashok Sharan sir, and all these, our Avanish ji, Torun ji, senior, all these founder faculty, they started this, they made the platform,
and then things rolled on, and we all have seen how with a very fantastic speed, how stupendously and fabulously this IGMS has prospered and flourished. And at the same time, the pharmacology department, so much so with the Dixit sir and Lolit and Hitesh and all, Monish, Sukollan and all. So the entire team, all the staff I've seen, everybody, they have contributed immensely towards the upgradation, immense upgradation and upliftment of this department from scratch to now DM clinical pharmacology and the research and international projects, so much of projects and all these things, and organizing conference, several conference. Actually sir has organized national level conference. This is I think the third or fifth one. This is the fifth one. He has previously organized 4 national conferences. This is the fifth one, and out of these 1 or 2 held here only. So we are fortunate to have this type of leaders, this type of visionary persons and pioneers, and the team also, very dedicated team are having. They left no stone unturned and ran from pillar to post to organize this conference in such a wonderful and befitting manner. So needless to say that they all deserve a big round of applause from the audience. They are really, really commendable and laudable job. They are marvelous, and their adroit dexterity and their mellifluousness actually attracted me, and I am really became a fan because there will be some bagatelles, of arranging these conferences, but they are really dithyrambic, really proper dithyrambics, and I have seen, they are passionate and they are intoxicated with enthusiasm. So that's why this is the result, and is all possible because of the speakers, the eminent persons. They came, they consented, they accepted our invitation and came long way from many places, and the whole entire audience, because without the audience it can never be successful. So such a galaxy of audience and hallowed gathering made it more successful, a grand gala event with academic fiesta and a scientific extravaganza. So I conclude here. Thank you very much for your patient hearing. Thank you, sir. I would like to invite our next esteemed guest, Professor Dr. Manish Mandal, Deputy Director, IGMS Patna, Professor and Head, Department of Surgical Gastroenterology and Liver Transplant. It is an honor that first liver transplant in Bihar was performed under the leadership of our distinguished guest. Sir, please come on dais. Respected dignitaries on dais, Dr. V.K. Gupta, our ex-director and present executive director of Bhubaneswar, Dr. Ashutosh Vishwas sir, Dr. Ranjit Guha, principal medical college, and who has not left any English word in dictionary which I can speak, Dr. Indu Sinha ma'am, Dr. Vipin Parihar, Dr. Hariyat Dixit sir, Dr. Lalit Mohan, of the dais, and our respected director sir, of course, who is always guardian and umbrella for all of us. In any institute, if we work, it is the most important thing is director. And if he takes care of everybody, nobody should be, any time be anything to think about or to be low about. Of the dais, we have Padam Shri Dr. J.K. Singh sir, our luminaries who have been the pillars like Dr. Uday sir, Dr. Ashok Saran sir, Dr. Vijay Kumar sir, what I will speak about our ex-president IMA, Dr. Sajaran sir, he is here. All our faculties who are here. It's almost 7 in the evening, and we have been waiting since last 2 hours for this function of inauguration. So you can think how much gravity Dr. Dixit sir is having, that he has taken in folded hands is all the luminaries of Patna out here. I also welcome Dr. Prashant, Dr. Shruti, and Dr. Veena, who have come from AIIMS Patna. So kind of you that you have come here. All the dignitaries, our fellow PhD students, senior residents, junior residents, interns, house surgeons. Today's function was much awaited, and I had a very hard time. Hard time because today's function has one more function in the institute, that is
Association of Surgeons of India. And hall is one, stakeholders are two. And I, being the EC member from Bihar, Deputy Director of IJMS, MS of IJMS, and I have to allot this hall. So I had two choices, either to give to sir or to give to my association. But I gave it to association, that is Dr. Dixit sir. This pharmacology is the backbone of all of us because a lot of transformation is going in, pharmacology. New drugs coming, new organisms coming, new viruses coming. So the backbone is, pharmacology. दवा ही नहीं रहेगी तुम लिखेंगे क्या और दवा आएगी कहाँ से फार्माकोलॉजी से आएगी so this is why all the topics which sir has taken into consideration today are very important as they have told before also that he has taken into consideration most important departments which evolve around our day-to-day disease. Cardiology was there, our cancer oncology was there, neuromedicine is there. Most important, research and methodology. That is the most important thing in any branch nowadays. Whatever we do, if we don't put a research paper, the value is zero. So I'm thankful to Dr. Dixit sir and his whole team. I cannot name everybody, but whole team was so active from last 1 month, and I was seeing them, watching them as administrator, that they don't have any pitfalls. Everything should be good, nice, and I hope that everything goes off well in coming days also. So, and if there is any pitfalls, I'll be sorry for it, not Dixit sir, because sir is so gentle, so smiling, and so charming that everything takes over him. Thank you. Thank you, sir. We are fortunate to have our next guest whose presence is synonymous with elegance and wisdom. A personality that not only commands attention but also inspires admiration. Please welcome President IPS Bihar Chapter, Head Department of Pharmacology, PMCH Patna, Professor Dr. Kumari Indu Sinha ma'am. गुड इवनिंग एवरीबॉडी सबों को मेरा सत नमन आई डॉक्टर इंदु सिन्हा प्रेसिडेंट इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी बिहार ब्रांच वेलकम यू एंड accompanying delegates present in the hall to participate the ASP Icon 2023 and make this event a successful and memorable one. We have assembled here for ASIPCon 2023 programs which is being conducted by IPS in IGMS Bihar branch Patna. Gracing this occasion, we have with us our chief guest Professor Y.K. Gupta, President AIMS Jammu, guest of honor Professor Dr. N.R. Biswas, now he is not here, who is currently VC Balaji Vidyapeeth Pondicherry and ex-director and VCs of Patna. I welcome Dr. Ashutosh Biswas, Director AIMS Bhubaneswar and ex-director and VC IGIMS Patna. I also welcome patron in the Chief Professor Dr. Vinday Kumar, Director and Vice Chancellor IGIMS Patna, Professor Dr. V.M. Dayal, Dean Academic IGIMS Patna, Professor Dr. Manish Mandal, Deputy Director IGIMS Patna, and Professor Ranjit Guha, Principal IGIMS Patna. I extended my warm welcome to Dr. Bipin Kumar Parihar, Dean Naipar Hajipur, Professor Harihar Dikshit, who is organizing chairman of the ASPCon 2023 and founder president of Academic Society of Pharmacology,
IGIMS, and General Secretary, IPS Bihar Branch. I also I welcome Professor Dr. Lalit Mohan, Organizing Secretary, ASP Icon, and Founder Vice President, ASPI, and other eminent distinguished doctors and pharmacologists who have excelled in their field. To this privilege, I have taken to this privilege to welcome our renowned speaker, that is the Principal Dr. Shantanu Kumar, Principal from the NMCH Beta, Professor Dr. N.R. Biswas from Pondicherry, from Dr. Ashutosh Biswas from the Bhubaneswar, Dr. V. Dinesh Kumar, Hyderabad, and Professor R.N. Sharma, ex-professor and HOD, Patna Medical College, and all speakers to this ancient city of Patliputra, renamed Patna. I thank all of them out of this time for their busy schedules to attend this academic feast. We have indeed grateful to them. Thanks a lot. Lastly, Atithi Devo Bhava. Thank you. Leadership and unwavering commitment. Sir, please join us on the dais. Very good evening. Dignitaries on the dais, Professor Gupta, Professor Biswas, Director M. Bhubaneswar, Professor Bipin Parihar, Madam, my teacher at Patna Medical College, Indu Sinha, stalwarts sitting here, the Dikshit sir, Manish Mandalji, Principal Ranjit Guha ji, and the most dynamic man, and I say with Dr. Dikshit, who has made this day possible, see the day, light of the day, Dr. Lalit Mohan, and Master, and Arvind sir, I see all the time with the cap, the Trisha Topi, Panave, Santosh ji, Rajesh ji, and everybody in the audience. A very good morning, ladies and gentlemen. This is a proud privilege for me to address this August gathering on the event of the association the Dikshit Sahab has made. And we are very thankful for organizing such a nice conference at IGMS Patna. Coming to pharmacology, my attachment and my attraction and my affection goes by when I got the gold medal in Patna Medical College in 1984. And from that day onward, every time when I'm reading the medicine, the pharmacology is always the first love. And the association with stalwarts here at IGMS, even at AIMS Patna, and Dr. Biswas and Dr. Gitanjali Bambare, ma'am, Dr. P.P. Gupta, Dr. Shruti is sitting there. All galaxy of persons working together made me that the pharmacology is in very good hand and is one discipline we always adore. The first thing, when I joined as a director, I did the inauguration of Animal House. And this was news, and all the reporters were asking, what is this Animal House and what is meant for the Animal House in a setup of a medical college or an institution? When they come to learn that the Animal House is the basic thing where we make a disease modeling, like if you're going for a pain, inflammation, arthritis, Alzheimer's, how it works and how the things progresses to learn the basic of disease. And not only that, for the drug trial, and many more things we can have with the Animal House. And we are lucky to have Animal House with the help of and with the effort of Professor Dikshit and the person sitting in the audience, Manoj. And they have done a wonderful job to making G+2 audience. And I'm there to announce that it will be G+5 in coming days. I take this opportunity to announce this. I wish this conference a great success, and I also extend my best wishes for all the people who are attending it to upgrade their knowledge, to get a platform to share their ideas with the stalwarts sitting on the dais and the Santanu sir and many other people who are delivering the lecture.
This is one occasion where we can upgrade our knowledge and we can share the ideas. By just knowing one lecture, going through one lecture, you are ahead of years because that lecture is compiled of years of experience. And this is an opportunity a conference provides. So I wish all the great success of this conference, and as a director, I extend all my support to this. Thank you very much. Thank you, sir. Now I'd like to invite our guest of honor, whose personalities shine as a beacon of inspiration for all of us. Professor Dr. Ashutosh Vishwas is the Executive Director and CEO of AIIMS Bhubaneswar, former Director and Vice Chancellor of Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. He worked as a Senior Professor of Medicine and Infectious Disease, AIIMS, New Delhi. He is also a renowned medical scientist. He published more than 200 medical research articles in national and international reputed journals. Please give him a huge round of applause to join on the dais. Good evening to everyone. The chief guest of this evening, Professor Y.K. Gupta. I know him more than 30 years in AIIMS Delhi, so I think he's also well known in this domain of pharmacology across the world. So I'm very lucky and also honored to be here today to take part in this conference. Dr. Professor Binde Kumar, the Director and Vice Chancellor of IGIMS, Dr. Manish Mandal, DDA of IGIMS, and Dr. Kumari Indu Sinha, Dr. Ranjit Goa, Dr. Bipin Kumar Parihar, Dr. Lalit Mohan, and Professor Dikshit, the main, I think the man behind this all, the event of this conference. It's really a great honor here. And first of all, I'd like to thank all the organizers for inviting me. And it's a weakness for me also. When I get a call, I try to manipulate and try to come and to meet you here. So probably I have developed a weakness to this IGIMS to meet to you people and to come here to sit together. एक बहाना था conference, मिलना था सबको, यही था main मकसद. It's really a composition of this conference I was going through, this all the topic and all. It's really wonderful to create this society, academic society of pharmacology of IGIMS. So I was thinking that IGIMS is an institution. So IGIMS has created a society of pharmacology. So I was thinking, I was asking also Professor Gupta ki can AIIMS create a academic society of pharmacology or academic society of neurology? So it's a good thing that IGIMS has created a society, is an institution, but again, exclusive aims of objective with, with the pharmacology, which is a backbone of the institute, I think, to grow. And it's good that people all came together to develop this society and to focus on very exclusive area of multiple area I was going through. So different department, almost all, including the research and artificial intelligence, you also have been put into this. So it's a era of artificial intelligence, all everything. So it's a good. I wish all the best to the society and the conference, and all the best. Thank you very much. Thank you all. Thank you, sir. Next, we will welcome the great personality and source of inspiration. His ability to uplift spirits, inspire one and all. I urge you to pay attention to the essence of the chief guest and inaugurator, his accomplishment, his journey, and his unique ability to leave an indelible mark. His enthusiasm and unwavering dedication has set them apart as a role model for all of us.
We are truly privileged to have amongst us a press personality whose achievements and awards are too numerous to be confined within the constant of time. His dedication, passion, and tireless effort have not only garnered award but also inspired countless individuals to strive for excellence. Though we may not be able to fully capture the depth of his accomplishment, it is the essence of his character that truly defines his greatness. Please welcome our chief guest and inaugurator, Honorable President, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Dr. Y.K. Gupta sir, President EMS Jammu, Head Department of Pharmacology and spokespersons, All India Institute of Medical Science, New Delhi. He is an in charge of National Poison Information Center and is also a National Scientific Co-Coordinator of Pharmacovigilance Program of India, PBPI. He has more than 180 publications in international and national journals and several chapters in books to his credit. Dr. Gupta sir is recipient of several awards including Young Scientist Medal from Indian National Science Academy, Shakuntala Amirchand Prize, Indian Council of Medical Research, ICMR. He is currently President of Society of Toxicology India and Dean, Indian Society for Rational Pharmacotherapeutics. He is the editor of National Indian Journal of Physiology and Pharmacology and member editor board of several international and Indian journal. Professor Dr. Y.K. Gupta sir, President EMS Jammu, former President EMS Bhopal. Please give him a huge round of applause to join on the dais. आदरणीय डॉक्टर बिंदे साहब, वाइस चांसलर of this university, Dr. Ashutosh Vishwas, Director, All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, Dr. Indu Sinha, Dr. Dayal, Dean Saab, Dr. Mandal, Dr. Guha. मुझे लग रहा था कि हम शशि थरूर से मिल रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हमारे बहुत दोस्त विकास मेदी, जिनको हम एनर्जी का बॉम्ब बोलते हैं, दिनेश के पीछे बैठे हुए दिनेश बदियाल, डॉक्टर रानी, डॉक्टर देसाई, डॉक्टर होता और बाकी बहुत से लोग जिनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि उनका हम नाम नहीं ले पा रहे। गलत नाम लेने से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उनके हम क्षमा प्रार्थी हैं। और 7 से मेरे ख्याल से 7:30 बज रहे होंगे, 5:30 का समय था। 5 का हिंदी में कहावत है, देर आए नहीं, देर आए ना, देर आए बहुत ही दुरुस्त आए। तो क्योंकि इतनी देर तक इस सभागार में इतने बड़े बड़े लोग को इकट्ठा करना और उनका रुक जाना, मेरे ख्याल से फार्माकोलॉजिस्ट के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। कोई दिल का इंचार्ज है, कोई लिवर को इधर से उधर कर देते हैं, ट्रांसप्लांट, फर्स्ट ट्रांसप्लांट यहाँ के करने वाले, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो कि अपनी ओपीडी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, जो अपनी ओपीडी हॉस्पिटल छोड़ के फार्माकोलॉजी को आके ये कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजी हमारा पहला लव था। उनको गोल्ड मेडल मिला इसलिए लव था या लव था इसलिए गोल्ड मेडल मिला, ये नहीं बता सकते हम लेकिन इस बात से हमें जरूर याद आ गया कि हमारा फार्माकोलॉजी कभी पहला लव नहीं था। हमने फार्माकोलॉजी एमडी मजबूरी में ज्वाइन करी थी। हमने ऑप्थेल्मिक्स ज्वाइन करी और 1 महीने तक हमने 2 महीने हमने ऑप्थेल्मिक्स में एमडी ज्वाइन करी। वहाँ पे एक भयंकर समय टीचर होते थे, डॉक्टर मेहरा नाम से, सिगार पी के लंबी सी क्लास में आते थे, सफ़ेद ड्रेस जितेंद्र जैसी, और उसमें उन्होंने एक दिन हमको डांट दिया कि तुमको तो मैं 3 बार में पास नहीं करूँगा। और उनकी बात लोग कहते थे कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी।
ऐसा डर बैठा कि हम उस बिल्डिंग में दोबारा नहीं गए। और किस्मत, एक हमारे गुरुजी होते थे डॉक्टर के.पी. भार्गव, उन्होंने कहा यार इस लड़के को मैंने देखा कहीं, बुलाओ तो जरा उसको, और उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया। हमारे फादर ने फिर यह कहा कि बेटा तुमको जिससे प्यार नहीं था तुम उधर क्यों जा रहे थे, अब जिसके पास आ गए हो उससे प्यार करो। तो हमारा पहला लव नहीं था, लेकिन दूसरा लव, लोग कहते हैं फर्स्ट लव इज बेस्ट लव, नो 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 नो, नॉट नेसेसरी। जो लव को आप दूर तक निभा सकें वो लव है। तो ये मैं आप सबसे इसलिए कह रहा हूं, अगर आप जो भी आप कभी भी सोचें कि फार्माकोलॉजी में आप मजबूरी से आ गए या आपकी सेकंड चॉइस थी, फर्स्ट नंबर आते हमारे मेरिट में नंबर 1 आता नीट में या किसी भी बीट में, तो हम मेडिसिन ज्वाइन करते, रेडियोलॉजी ज्वाइन करते, लेकिन अब क्या किया, अब आपने फार्माकोलॉजी ज्वाइन करी, तो आपका पहला लव अब ये है, पहला नहीं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लव ये है। तो जिस चीज में हम हैं उस चीज पे गर्व करें, उस चीज को लव करें, तो हमारा मेरे ख्याल से यही आज नतीजा होगा कि हमने जितने भी फार्माकोलॉजी वाले नहीं थे वो आज सब कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजी बैकबोन है, फार्माकोलॉजी से हमारा लव है, फार्माकोलॉजी नहीं था अब तो हो गया, हम तो मना के रहेंगे आपको लव फार्माकोलॉजी का। और हम अब ये भी चाहेंगे कि जो फार्माकोलॉजी को प्यार करते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट को भी उनसे प्यार करना चाहिए। जब हम कहते हैं हमें इनसे प्यार करना चाहिए, तो हमारा मतलब ये है कि हमको जाके हेपेटोलॉजिस्ट से ये बात करनी चाहिए कि आपने अगर आधा जिगर निकाल दिया तो उसमें हमारी ड्रग का मेटाबॉलिज्म, काइनेटिक्स, डायनेमिक्स का क्या असर होगा। क्या हम और आप कोलैबोरेट करके इसकी स्टडी कर सकते हैं? कैन वी डू दिस स्टडी? कैन फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लिवर कैन बी टेकन ओवर बाय सम अदर organs, and if there is a derangement of 90% of the liver, we know that even if 75% of liver is taken out, perhaps 25% of remaining liver can work. तो क्या यही रीजनरेटिव मैकेनिज्म हम दूसरी जगह भी कर सकते हैं? और यही हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी, हमारे पास जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनको भी हम जाके कोलैबोरेट करें कि सर हमको ये बताइए कि आपने सुबह तो बता दिया एंटी एरिथमिक ड्रग बड़ी मुश्किल थी, अरे एंटी एरिथमिक ड्रग तो अभी तक हम पढ़ाने से डरते हैं और उन्होंने इतनी सरलता से हमको पढ़ा दी। तो ये भी एक हमें उनसे सीखना चाहिए। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पे हैं, तो हमारी तो उनसे प्यार मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे बिना न सो सकें न जी सकें। जब जिए नहीं इसलिए क्योंकि हम उनकी गलतियां निकालें कि भाई ये ड्रग परचेज कर रहे हो, ये एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल दो। क्यों ना आप अपने हॉस्पिटल में एक फार्माको इकोनॉमिक्स कमेटी का गठन करो जो ये बताए कि हेल्थ इकोनॉमिक्स के बेसिस पर ये ड्रग नहीं, ये ड्रग चाहिए। इस ड्रग को अगर हम साल भर इस्तेमाल करें तो ये हमारे इस इतने मरीज के लिए इतना करोड़ रुपया या इतने लाख रुपए हमारे बच सकते हैं जो गरीब मजदूरों के लिए दवाई देने में काम आ सकते हैं। और यही अगर आप फार्माको इकोनॉमिक्स की पॉलिसी आप यहाँ के अलावा दूसरे हॉस्पिटल में भी लीडरशिप के जरिए आप फैला दो तो कंट्री को कितना फ़ायदा हो सकता है। हमारे डॉक्टर विश्वास जो डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के हैं, दुनिया के जाने माने इन्फेक्शन डिजीज के हस्ती हैं। इनके पास जाके सर पकड़ लो, इनका झुझोड़ दो कि भाई आप तो हो, तो ये एंटीबायोटिक्स इर्रेशनल प्रिस्क्रिप्शन क्यों हो रही हैं? क्यों ना हम एक स्टीवर्डशिप साथ में मिलकर प्रोग्राम करें। आज दुनिया में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का इतना ज़्यादा इशू है कि WHO ने इसको आगे बढ़ाया। G20 में ये वन ऑफ द मेजर एजेंडा है। आज हम बात कर रहे थे क्योंकि मैं इस समय WHO का एंटीबायोटिक का प्रिंसिपल एडवाइज़र हूँ यूरोपियन फॉर अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज़। तो क्यों ना हम यहाँ पे स्टीवर्डशिप करें, क्यों ना हम लोगों को भरोसा दिलाएं
कि भाई आजकल जो एंटीबायोटिक जो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो कभी भी कल्चर सेंसिटिविटी का वेट नहीं करते। 90% लोग कल्चर सेंसिटिविटी का वेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? सोचने की बात है। फिर हम कहते हैं कि कल्चर सेंसिटिविटी हम पढ़ाते हैं लेकिन होती नहीं है। अरे भाई जब कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट जब 4 दिन के बाद, जब 2 दिन के बाद आएगी तो तब तक मरीज को तो हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ही देंगे ना। और अगर हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जब हम मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक की बात करें तो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का कॉस्ट ट्रीटमेंट से ज़्यादा है, तो आदमी वैसे भी नहीं जाएगा उसमें। तो टर्न अराउंड टाइम जो कहते हैं TOT, जब वो हमारा कम होकर 4 घंटे या 6 घंटे या 12 घंटे पे आ जाएगा तो हो सकता है यहीं पे बैठे जो क्लिनिशियन हैं वो कहेंगे कि भाई पहले ये कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करा के ले आओ और रिपोर्ट आने के बाद हम 12 घंटे वेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सीवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर हमारा चाइल्ड बच्चा सेप्सिस में जा रहा है तो हमें एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हमको एम्पेरिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो हम पिछली 20 साल पहले की किताब जो फार्माकोलॉजी में पढ़ी थी उसके हिसाब से करें, या हम 10 साल पहले जो मेडिसिन की किताब में पढ़ी थी जिसकी नॉलेज 15 साल पुरानी है उसके हिसाब से शुरू करें, या जो हमारे KOL हैं की ओपिनियन लीडर वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उससे करें, या हमारे पास कोई एविडेंस है उसके बेसिस पे हम करें। आंसर हमारा होना चाहिए कि हमारे पास जो एविडेंस है, और एविडेंस तब आएगी जब यहाँ के हम लोग सब मिल के एंटीबायोग्राम तैयार करेंगे कि यहाँ पर भाई ये आज का एंटीबायोग्राम है, ये पटना का एंटीबायोग्राम है, ये हमारा दिल्ली का एंटीबायोग्राम है, ये चेन्नई का एंटीबायोग्राम है, जो डिफरेंट है क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब फार्माकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मेडिसिन वाले लोग मिलकर काम करेंगे। तो ये हमारे पास एक चैलेंज है। हम यहाँ पे खास तौर से इस शहर में अगर हम कहें कि सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या था, आपको शायद पता नहीं है, पाटलिपुत्र दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी। इसकी हम नालंदा विश्वविद्यालय की और उसकी बात तो हर एक कोई जानता है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे बोधि वृक्ष जो आपने कहा, और आपने थोड़ा सा उसमें हम संशोधन करना चाहेंगे, आपने कहा बोधि वृक्ष बढ़े। बोधि वृक्ष तो वही है, उसके नीचे जो आया वो बढ़ गया। तो जो वहां बोधि वृक्ष के नीचे आएगा वो अपने आप बढ़ जाएगा। ये तो बोधि वृक्ष, इसीलिए तो हमें लालच था यहाँ पे आने का। हमारा दूसरा लालच ये भी था कि दीक्षित साहब जिन्होंने कहा, तो फिर हमने भी जैसे डॉक्टर विश्वास साहब ने कहा कि हमने मैनिपुलेशन किया यहाँ आने के लिए, उनको ज़रा लालच था यहाँ आने का, हमने भी मैनिपुलेशन किया। हमारी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि जब हमारे डॉक्टर विकास ने बताया कि नहीं सर चलिए वहाँ पे वो रिटायर हो रहे हैं, हरिहर जी रिटायर है, मैंने कहा ऐसे हम टायर नहीं बदलने देंगे। तो मतलब खींच लाए। तो ये भी यहाँ की 2-3 चीज़ें जो बड़ी खास हमको लगती हैं, उसमें से एक यहाँ का जो चूरा खाया हमने चिवड़ा वाला, दूसरा लिट्टी, और तीसरा दीक्षित साहब। तो दीक्षित साहब का मतलब प्यार और यहाँ का जो वो है वो बहुत ही अच्छा है। मेरा कुछ 2-3 चीज़ें हम कहना चाहेंगे खास तौर से फार्माकोलॉजी वालों के लिए, कि हम जब फार्माकोलॉजी में पढ़ते थे और आज जो फार्माकोलॉजी में प्रैक्टिस है उसके अंदर जो डाइकोटमी है, उसके अंदर जो गैप है, वही रिस्पॉन्सिबल है कि आज भी जब नीट में स्कोरिंग आती है तो फार्माकोलॉजी लोग कहते हैं अच्छा यार अब कुछ नहीं बच रहा तो फार्माकोलॉजी ले लो। ये सत्य है, इसको बदल देना है। जबकि कहें कि यार फार्माकोलॉजी, तुमको फार्माकोलॉजी मिल गई, तब लोग आश्चर्य से देखें। अब कह रहे हैं अच्छा फार्माकोलॉजी मिल गई, तो ये इसके जिम्मेदार हम टीचर्स हैं।
उस सब्जेक्ट को जिसको आज लोगों ने कहा हमारा पहला लव है, रीढ़ की हड्डी है, हमको गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल तो हम एक ही को दे सकते हैं बैच में, सबको नहीं दे सकते मोटिवेट करने के लिए, लेकिन हम उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं, कनेक्ट तो कर सकते हैं। जो चीज आज के संदर्भ में नहीं है उसको हम वाइवा में अपनी बुद्धिमानी दिखाने के लिए क्यों पूछते हैं? हमारे पास अक्सर यही होता है कि बताओ भाई इसका साइड इफेक्ट, और बताओ और बताओ और बताओ। अरे भाई कब तक उसकी पूंछ के आखिरी बाल तक जाओगे? तो फिर अल्टीमेटली हमने लोगों को बताया यार तुम ऐसे सवाल का जवाब दिया हो, एनवीडी सीसीडी बोल दो, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया कोमा कन्वर्जन डेथ। कोई भी, जिसे कह सकते हैं कोई भी टीचर, नोबेल लॉरिएट भी इसको गलत नहीं ठहरा सकता, क्योंकि एंटी एमेटिक से भी नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, एंटी डायरियल से भी डायरिया हो सकता है, किसी को भी ज्यादा खा जाओ पानी भी पी जाओ कोमा कन्वर्जन डेथ तो हो ही सकती है। तो आप मना कर सकते हैं? तो हमको ये छोड़ना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि भाई क्लिनिशियन आपको क्या चाहिए जो हम पढ़ाएं। हम जो पढ़ाएं वो आपके काम नहीं आ रहा तो हमको बता दो, क्योंकि दिमाग में कैपेसिटी तो कुल मिला के छोटी सी है, और उस कैपेसिटी को हम उस छोटे से बच्चे को, छोटे से गांव से, छोटे से शहर से आया है, इतना हमने भर दिया, और कई बार तो हमने थरूर साहब की लैंग्वेज भी उसके ऊपर थोप दी, तो वो तो घबरा के बेचारा भाग जाएगा। तो हमें तो देखना है कि यहाँ पे क्या जरूरत है, क्या तर्क संगत है आज के दिन में। आज क्यों हम उसको पढ़ा रहे हैं कि यार ये एंटी एरिथमिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रटे जा रहे हैं रात को? हम क्यों भाई, जब हम कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी तो हमको बताने दो कि कौन से 4 एंटी बायोटिक हमको चाहिए, कौन से 4 एनाल्जेसिक चाहिए, कौन से 4 एंटी हाइपरटेंसिव चाहिए, किससे फायदा है। और वही हमारी, जब हम चेयरमैन हैं पिछले 10 साल से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन की, जब हम उस नेशनल लिस्ट एसेंशियल मेडिसिन को बनाते हैं तो हम सारी दुनिया के कंट्री के 450 एक्सपर्ट्स को हमने इकट्ठा करके, कार्डियोलॉजी से लेकर के सारे डिपार्टमेंट के, सिर्फ यही पूछते हैं कि बताओ यार इन कौन सी मुझे 10 दवाइयाँ बताओ जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हम वो नहीं पूछते कि मुझे 5 दवाइयाँ बताओ जिसके बिना इंडस्ट्री फायदे नहीं करेगी, वो हमारा लास्ट है। कौन सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट एवर थिंग। एंड उसके लिए हमको एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ फार्माकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक हमारे फार्माकोलॉजिस्ट को ये सोचने की शक्ति नहीं आएगी, तर्क नहीं आएगा कि विच इज़ बेटर इन टर्म्स ऑफ एफिकेसी, टॉक्सिटी एंड इकोनॉमी, तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि भारत सरकार में आज के दिन पॉलिसी बनाने के लिए, एडवाइस करने के लिए, एविडेंस बेस्ड एडवाइस करने के लिए बहुत ही कम लोग और कम तथ्य हैं। जब हम ये पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव इन 3 एस इनहिबिटर्स में बेटर है, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं मैं तो ये प्रिस्क्राइब करता हूँ, दूसरा कहता है मैं तो ये प्रिस्क्राइब करता हूँ, मुझे तो ये एंटी हिस्टामिनिक अच्छी लगती है, कोई कहता है मैं तो ये, मेरे मरीज तो इस एनाल्जेसिक से बेस्ट सूटेड है, चाहे वो कॉम्बिनेशन है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। हमारे फार्माकोलॉजिस्ट को आके पहले बताना चाहिए कि आप, पसंद है आपकी, लेकिन बात हमारी, क्योंकि हमारी बात में तर्क है, हमारी बात में एविडेंस है, हमारी बात में पब्लिकेशन है। आपका एक्सपीरियंस, परसेप्शन लीस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपीरियंस some important, but evidence is the only importance. And if you give an explanation based on evidence, I think you will be the leader. और वो हमें चाहिए, और वही हमें नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनाए, चाहे हम उसको फार्माको इकोनॉमिक्स बनाएं। भारत में आपको पता होगा नहीं, एक फार्माको इकोनॉमिक्स कमेटी है जो कि एनपीपीए के अंडर में आती है, एंड इंसिडेंटली आई चेयर दैट। और उस फार्माको इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम ये डिसाइड करते हैं कि ये फार्माको इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ये ड्रग आनी चाहिए नेशनल लिस्ट ऑफ प्राइसिंग कंट्रोल में, या नहीं आनी चाहिए, या नहीं इसमें। समस्या कई बार क्या आती है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप भी उसके भागीदार हैं।
समस्या आती है कि वो आते हैं साहब एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन आया जिसमें एंटीबायोटिक 3 हैं, 14 एंटीबायोटिक्स हमारी कमेटी के बाद, उसमें डॉक्टर विकास भी थे, वो बैन हो गया, आपने पढ़ा होगा। लेकिन अभी डॉक्टर होटा से हम बात कर रहे थे, इतने सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन उस कमेटी में आते हैं, और जब हम कहते हैं कि साहब ये इस कमेटी में नहीं है, हमको डिस्कस करना है क्योंकि ये हमको लगता है रैशनल नहीं है, इसलिए इसमें हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। वहां से वो डीटीएबी में मिनिस्ट्री में रिव्यू पिटीशन करके वापस आता है कि साहब आप ये मत कहिए, क्योंकि यही प्रोडक्ट एक कमेटी जिसमें कि एसईसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें देश भर के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने इसको अप्रूव किया है। अरे भाई, हम कहाँ करेंगे? हमारे ही लोगों ने उसको, एक्सपर्ट ने उस फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को जब अप्रूव किया है, तो दूसरे वाले हम कौन है कहने वाले? तो हमारा तो सारा अस्तित्व खत्म। इसी तरह से हम आपको बताएं, एक सिरप होता था ट्रायमनिक सिरप, अगर आपको याद हो, सबसे ज्यादा बिकने वाला, और उसके 6 लोगों की कमेटी ने उसको कहा कि ये बकवास है, ये इर्रेशनल है, इसको बंद कर दो। कोर्ट में उनके मालिक ने, क्योंकि दिस वाज ए ब्लॉकबस्टर, और 2 बंडल इतने बड़े बड़े, करीब 11,000 प्रिस्क्रिप्शन हिंदुस्तान भर से इकट्ठे किए, जिसमें कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज उस समय एक ही होता था, वहां से लेकर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लोगों के तक के प्रिस्क्रिप्शन थे। जज ने कहा कि डॉक्टर गुप्ता, हमको उन्होंने भेज दिया भिड़ने के लिए, मतलब न तो हथियार न गोला बारूद, जाके लड़ जाओ। उन्होंने कहा कि साहब ये आपकी छोटी सी कमेटी एक कमरे में बैठ के डिसाइड करती है कि इर्रेशनल है, और यहाँ पे ये प्रिस्क्रिप्शन जहाँ के आपके इंस्टीट्यूट के भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हम इनकी माने या आपकी माने? कहने का मतलब ये है, जब हमारे ही एमडी, हमारे ही प्रोडक्ट जब इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वही एडवाइस करते हैं अपने मालिक को, मार्केटिंग लोगों को, कि नहीं साहब इसमें आप एक एनाल्जेसिक भी मिला दो, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी मिला दो, बहुत बढ़िया बिक्री होगी। कहाँ गया आपका एथिक्स? कहाँ गया आपकी पढ़ाई? कहाँ गया आपका रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग? कहाँ गई आपकी इस तरह की एकेडमिक सोसाइटी की वैल्यू? ये हमको सोचना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे कंधे पे बहुत भार है, और वो भार हमको तभी पता लगता है जबकि हमारे जैसे हमारे बहुत सारे दोस्तों के कंधे फ्रैक्चर हो जाते हैं, तब हमको लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। हम जब उनसे पूछते भी हैं कई बार अपने स्टूडेंट से कि यार तुम इसके मेडिकल डायरेक्टर हो, तुमने कैसे एडवाइस किया? तो कहता है हमारा बॉस जो है वो मार्केटिंग हेड है। अरे भाई, आप जब मार्केटिंग से डरने लग गए, साइंस खो दी, तब हमको ऐसा ही है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस ऑडियंस, बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ये एकेडमिक सोसाइटी ऑफ फार्माकोलॉजिस्ट ऑफ IGIMS है। हम बात कर रहे थे यार ये ऐसी सोसाइटी इतनी छोटी सिर्फ IGIMS ने क्यों बनाई? तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ IGIMS के फैकल्टी को और स्टाफ को जिन्होंने ये सोचा। लेकिन हम सिर्फ आई रखेंगे अपने सेल्फिश के लिए, आई मतलब इंडिया, और आप लीडरशिप रखो, लेकिन हमको भी उसका एसोसिएट मेंबर बना दो। और जितने भी यहाँ पे बैठे हैं जो नॉन फार्माकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी एसोसिएट मेंबर बनाओ अपना। आप लीडरशिप रखिए, लीडरशिप तो यहाँ का मतलब बूंद बूंद में है। भारत का राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, मतलब वी एंड गोविंदाचारी जो हमारे फार्माकोलॉजी के वन ऑफ द स्टारवर्ड्स एंड फाउंडर। तो ये एक छोटी सी कहना चाहूँगा कि हमारी टीचिंग, पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएट का जो सेमिनार मैंने आज सुना, उसको रिलेवेंट करने की ज़रूरत है। चाहे हम कंटेम्प्रेरी, चाहे कॉम्पिटेंस, चाहे कुछ भी वर्ड्स यूज़ करें, रिलेवेंट हो। हम कई बार बहुत सारी कमेटीज़ में बोल चुके हैं कि रिलेवेंस का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो निकले वो इंडस्ट्री वाला पहले ही लपकने के लिए तैयार हो, इंडस्ट्री ट्रेंड हो, GCP उसको आती हो, GLP उसको आता हो, GMP उसको आता हो, जो कि यहाँ पर जाके इंडस्ट्री में न सीखे। ड्रग रेगुलेशन जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ड्रग रेगुलेशन हिंदुस्तान का बहुत पीछे है।
ड्रग रेगुलेशन में एडवाइस कौन करेगा? फार्माकोलॉजिस्ट करेगा, टॉक्सिकोलॉजिस्ट करेगा। उसी को मालूम है कि यार रैट और माउस दो में हम क्यों टॉक्सिटी कर रहे हैं जबकि सिर्फ एक रैट में जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोगों ने चेंज करी। एंड आई चेयर्ड द कमेटी विच इज नाउ इस NDCT 19 बोलते हैं, ड्राफ्ट कमेटी हमने उसको बनाई। उसमें हमने 12 फार्माकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन किया और मोर देन 120 एक्सपर्ट से बात करी। हिंदुस्तान में आज जो हम कंपनसेशन रूल बोलते हैं, आई चेयर दैट कमेटी, और उसमें ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड 2 यूनिवर्सिटी के लोगों ने आके कहा, फीडबैक दिया, अरे डॉक्टर गुप्ता ये हम करेंगे तो ये तो हार्मोनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो कहीं पे भी नहीं होता कि कंपनसेशन हम ऐसे दें। हमने आर्ग्यू किया कि आपके यहाँ कंपनसेशन टॉर्ट्स लॉ से होता है कि जब आप कोर्ट में जाएगा क्लिनिकल ट्रायल का तो वो कोर्ट में डिसाइड करेगा कि इसको कंपनसेशन मिले कि नहीं मिले। हमने आर्ग्यू किया कि भाई अगर हिंदुस्तान में कंपनसेशन के लिए कोर्ट में जाएगा तो उसके तो ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को मिलेगा कंपनसेशन की। 5 लाख रुपए तुम्हारे बाबा या नाना क्लिनिकल ट्रायल में थे, मर गए थे, अब ये तुमको 5 लाख रुपए है। बेटा कहेगा अच्छा बाबा थैंक यू, मैंने साइकिल खरीद ली। तब वो साइकिल ही खरीद पाएगा ना, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट इतनी है कोर्ट में। फिर सिर्फ हिंदुस्तान में नो फॉल्ट क्लॉज कंपनसेशन है, जो अब बाकी यूनिवर्सिटीज में भी लोग स्टडी कर रहे हैं कि हम इसको हम भी यूज करें। तो लीडरशिप तभी आती है जब आप अपने आप को आउट ऑफ बॉक्स, बिना डरे, बिना ये सोचे करें कि भाई दुनिया कहेगी, हम दुनिया से अलग चलने वाले हैं। और दुनिया जब हम अलग चलेंगे तभी जब दुनिया सोचेगी कि ये हमारी बात सही है तो दुनिया हमारे पीछे आएगी। और यही हमारे देश का इस समय नारा है। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजिस्ट में जो सबने कहा इतनी शक्ति है। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, हम लोग कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल के स्लाइड दिखाते हैं बहुत पुराने से, अब 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, $1 बिलियन लगता है। अरे भाई वो जमाने खत्म, अब स्लाइड वो मत दिखाओ। कोविड ने बता दिया कि वैक्सीन हमने लेस देन 2 ईयर्स में दुनिया के लिए बना दी, अपने लिए छोड़ करके, और मच लेस एक्सपेंसेस में। बिकॉज अब हमारे पास आज लेक्चर लिया कि फ्लेक्सिबल ट्रायल, एडेप्टिव ट्रायल, कितने हम उसे एडेप्टिंग कर सकते हैं उसमें। तो वो स्लाइड खत्म। अब जीनोमिक्स का ज़माना आ गया है। हमको ज़रूरी नहीं है कि हम 1000 लोगों में ट्रायल करें, हम मच छोटे लोगों में ट्रायल कर सकते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में लेके उसके ज़्यादा इंफॉर्मेशन थोड़े में से बना सकते हैं। एंड देयरफॉर दोज स्लाइड्स मस्ट बी डिलीटेड। Make your own slide. Give example of COVID of your nation, which will feel you pride. I think ये भी एक हमारे लिए जरूरी है। इनोवेटिव थिंकिंग। लोग, आपने सुना होगा ना, जो कौन सी कहानी है, लीक गाड़ी चले, आगे लीक है, बहुत बढ़िया। ये किसने बोला? बहुत कम लोगों को पता होता है ये हिंदी, मुझे लगता था कि ये पटना में जरूर पता होगा लोगों को, क्योंकि ये नॉलेज की नगरी है। लीक गाड़ी चले, लीक होती है ना पगडंडी, जो लीके चले कपूत, बिन लीके तीनों चले सायर, सिंह और सपूत। हम सब सपूत हैं, सिंह भी हैं, क्योंकि जहां आपको मौका लगे, जहां आपकी शक्ति है वहां दहाड़ो, और जहां आपकी शक्ति नहीं है वहां सुनो, और सुनने के बाद उसको अडॉप्ट करो। ये हमारा होना चाहिए। तो इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देंगे, जिससे कि फार्माको विजिलेंस 2010 में हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में शुरू करी। 10 सेंटर थे, और उपसला मॉनिटरिंग सेंटर वाले आके बोलते थे कि हमको $5000 आप जो साल के देते हैं, अब हम उससे नहीं खुश हैं, हमको $10,000 हमको साल के चाहिए। किस लिए? आप हमको अपना सूत दो, हम तुमको कपड़ा दे देंगे। हम अपने एडवर्स रिएक्शन उनके पास भेजे हैं, वो उसकी एनालिसिस करके हमको दे देंगे, और इसके लिए हमसे $10,000 का किराया साल का भी मांगे। आज जब हमने उनको मना कर दिया तो आज हमारे पास 600 सेंटर्स हैं, और ये 600 सेंटर्स आज बताते हैं कि हमारे पास इतना एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डेटा है कि न तो वो पैसे की बात करते हैं, अब वो कहते हैं कि हम आपको एक्सेलेंस सेंटर बना देते हैं, हम आपको उपसला का ये बना देते हैं, वो बना देते हैं। अरे भाई, ये इसलिए
कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तकदीर बता तेरी रजा क्या है। तो ये मेरे ख्याल से ये हमारे फार्माकोलॉजिस्ट का एक मोटिव होना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दीक्षित साहब, आपने और विकास मेदीन दोनों ने मिलकर मुझको यहाँ पे लाने के लिए प्रोत्साहन किया। और मेरा तो एक लालच और भी है, वो रात को हम पूरा करेंगे लिट्टी खाने का। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। Binde. I request Professor Dr. Binde Kumar sir to kindly felicitate Professor Dr. Y.K. Gupta, President AIMS Jammu, former President AIMS New Delhi and AIMS Bhopal. Again, I request sir to felicitate our guest of honor, Professor Dr. Ashutosh Vishwas, ex-director, IGMS Patna, Executive Director, AIMS Bhubaneswar. Thank you so much, sir. Now I request Professor Dr. Hariyar Dikshit sir to kindly felicitate our director sir, Professor Dr. Binde Kumar, Director cum Vice Chancellor, IGIMS Patna. I request sir to please felicitate Professor Dr. Indu Sinha ma'am, President, Indian Pharmacological Society, Bihar Chapter. Thank you so much, sir. Now I request Professor Dr. Lalit Mohan sir to kindly felicitate Professor Dr. Manish Mandal, Deputy Director, IGIMS Patna. I request sir to please felicitate Professor Dr. Ranjit Guha sir, Principal, IGIMS Patna. I request sir to please felicitate Dr. Vipan Kumar Parihar, Dean, Naipar, Hajipur. Thank you so much, our dear guests, for joining us on this memorable occasion. Now I'll hand over the mic to Dr. Keshav Kumar Sinha, sir. In the name of God and with utmost humility, please allow me to give a bird's eye view of this mega scientist, a mega star, Professor Dr. Hariyar Dikshit. Let this be a befitting tribute to the most astounding journey of his career and as a social person, and the way he has carried the fraternity on his shoulders. I am so obliged to be doing this for you, sir. Professor Hariyar Dikshit, Professor and Head, Department of Pharmacology, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna. The founder president, Academic Society of Pharmacologists of IGIMS. Chairman, IMA Headquarters, Standing Committee of Pharmacovigilance, 2022. Member of IMA Headquarters,
Standing Committee, Committee of Finance. Past President IMA Bihar, Vice President, I'm sorry, maybe still has time, can become the President as well. Secretary IPS Bihar State Branch, past National President, Vice President, I'm sorry, I'm inclined to make him President, past National Vice President of Society of Pharmacovigilance, India, member of Specialist Board of NBE, past member Signal Review Panel of Pharmacovigilance Program of India, India Pharmacopoeia Commission, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, past nominated member CEC, CEDESCO, established postgraduate and undergraduate DM clinical pharmacology courses in this institute. Okay, I'll skip a few of them. Now, the exponential trajectory of growth of this institution ever since its inception is the brainchild of a very vibrant team. Professor Harihar Dikshit was an incredible performer of this amazing evolutionary growth. Like any charmer, this institute was designed, sophistically shaped to achieve, sir, I have taken pains to write all these things. I must let you know. It will just take 5 minutes, just 5 minutes. Like any charmer, this institute was designed, sophistically shaped to achieve, to accomplish the most imaginative reality, relentlessly aspiring to acquire a global recognition. And the team did it outreaching all conceivable super specialities in record time. Professor Harihar Dikshit, Professor Harihar Dikshit had enunciated his dreams and has lived it in his lifetime with divine grace. He is a fierce warrior. I have to match the Professor Tharoor, Dr. Tharoor also. He is a fierce, this is just 1, 2 seconds. So I have your permission, sir. I should obey you. He is a fierce warrior, brilliant megastar, outstanding performer with a great persona, with a great disarming smile. Revered, respected, the glitz, the glamour, his honesty, his positivity, a dedicated scholar, a perfectionist. Your vision, your spirit is sensational, is a rage, which you are surprisingly unaware of. The pride of our fraternity. To top up these, he is Chairman Institutional Animal Ethics Committee, IGIMS Patna. From an animal holding area in 2011 to 2013 to 2014 saw a specific space for Central Animal House taking shape. In 2016, approval after satisfactory inspection by CPC SEA saw the beginning of research on small animals. In 2023, a full-fledged approval with breeding facility is approved and registered from CCSEA. It was done. This or in the pipeline.
this is your unaccomplished work which you have to accomplish. Okay. अच्छा. आपके श्रेष्ठ नेतृत्व, श्रेष्ठकर प्रबंधन, महत्वपूर्ण प्रशासनिक कुशलता, कर्म प्रधान जीवन शैली, आपका फौलादी इरादा, संकल्पित यात्रा, अद्भुत सहृदयता, आप संपूर्णता का विहंगम कीर्तिमान का एक करारी दस्तक हैं, संवाहक हैं. एक अत्यंत कामयाब लोकप्रिय चरमोत्कृष्ट बुनियादी दमदार नियामक. आपने अति विशिष्ट कृतित्व, सघन मेहनत से इस आयुर्विज्ञान संस्थान को एक अति महत्वाकांक्षी स्वरूप प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाई है. Now this is in another dimension in Hindi which sir can't compete. So with this, now may I request our chief guest to felicitate Professor Haryar Dikshit, sir. By SPI. We are felicitating now Dr. Haryar Dikshit, sir, from Academic Society of Pharmacologists of IGMS. Yes. Not from department now. It will be done later on. So I'll save some of the text. नहीं, नहीं. ठीक है सर. What is there. इस आयुर्विज्ञान संस्थान को एक अति महत्वाकांक्षी स्वरूप प्रदान हुआ है. वक्त पुरुष, मौका और दस्तूर संगत शख्सियत, एक अलग कोशिश, एक दमदार गूंज, एक नई सोच, एक नायाब हैरत अंगेज धमाकेदार उपलब्धियों के जनक डॉक्टर प्रोफेसर हरिहर दीक्षित. The doctor with an astronomical ideological spectrum of phenomenal vision, Dr. Professor Haryar Dikshit. अरे आपको देना है अभी. हो गया. Sir, now there is no harm in taking all this praise. You are retiring at the end of this month, and then you are the boss of yourself. So मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद कहने के लिए कि सारे शब्दों को मेरे पास जितना जानकारी है वो सारे शब्द तो ये और गुहा जी लेके चले गए और मेरे पास तो अब शब्द भी नहीं है. धन्यवाद. now, moment to felicitate. Felicitate the second in command, who is going to take command on the 31st of September, Professor Dr. Lalit Mohan, to be felicitated by Professor Dr. Haryar Dikshit. And Binde sir, he is the director and Vice Chancellor, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences. It's time to get after him, sir. ठीक है ना? He remains the asset of any organization which he has been through and which he is going to take over. Ceremony. We thanking all of you for being a part of this event. And now I would like to invite our organizing secretary, Professor Dr. Lalit Mohan sir, for vote of thanks. Good evening to all dignity on the dais and off the dais. I am deemed it to great honor and privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion of first conference of Academic Society of Pharmacologists of IGMS.
Patna in collaboration with Bihar chapter of Indian Pharmacological Society and supported by Naipar Hajipur and NTPC India. NTPC, not India. NTPC, okay, India. Today function chief guest is Professor Dr. Y.K. Gupta sir, President AIMS Jammu, ex-President AIMS Bhopal, ex-HOD Pharmacology AIMS Delhi, whom I know personally from beginning of my career as assistant professor, KMC Manipal. I met him during the conference of IPS in Hyderabad, sir, which was organized by Dinesh sir, which NIN Institute in Hyderabad. It may be, sir, 2005, 2008 like that, 8 or 9 like that. The guest of honor for Professor Dr. N.R. Biswas, ex-director cum Vice Chancellor IGMS Patna, presently Vice Chancellor of Sri Balaji Vidyapeeth Pondicherry, due to his positivity and vision of government of Bihar, IGMS developed in real sense of institute, which offer various paramedical courses, MBBS, MD, MS, DMS, SS. Department of Pharmacology has DM Pharmacology and PhD course. Thanking you, sir. Sir just left sir just left us. Another guest of honor is among us Professor Dr. Ashutosh Biswas, ex-director and Vice Chancellor IGMS Patna and presently Executive Director AIMS Bhubaneswar. Although he had a very short span of time at IGMS, but his leadership and efficient working taught us how to work more sincerely. On more dignitary from AIMS Bhubaneswar, ex-Dean and HOD Pharmacology, Dr. Devasish Sota, he is also coming us on this occasion. I am grateful to our Director and Vice Chancellor of this institute, Professor Dr. Bindya Kumar, for being the patron-in-chief of this conference. Many of my dreams and extended development of pharmacology department. Just I told sir before he inaugurated Central Animal House, and sir assured us it will be later on in 5th floor. So development of pharmacology and Department of Central Animal House examination cell, where I am working as Associate Dean Exam, our Dean Exam present here, Om sir, and Member Secretary of Library. All these is worth due to his constant support and blessing. Thanking you, sir, for believing me and providing your valuable support during this conference too. Our principal, Dr. Ranjit Guha, sir, and our Deputy Director MS, Professor Dr. Manish Mandal, sir, have always encouraged academic program and helped to get administrative clearance. Sir, I told recently how we got this hall. So get administrative clearance during organizing this conference. Sir, I am thankful to all of you. I owe a special gratitude to resource person to this conference, Professor Dr. Shantanu Tripathi, ex-HOD Kolkata School of Tropical Medicine and Principal of Netaji Subhash Institute of Medical Science, Vita, who supported from the inception of Department of Pharmacology, IGMS. Now he is also visiting professor of IGMS Patna, Professor Dr. Vikas Medhi, sir, PGI Chandigarh, always there for wherever and whenever be required. Dr. Pramod Manji, Dr. Shruti Singh, AIMS Patna, Dr. Hitesh Misra, Chief Editor of Souvenir Committee, IGMS Patna, Dr. Manish Kumar, looking of Registration and Finance Secretary, Dr. Sur Kalyan Saha, Dr. Pankaj Parwara, looking Scientific Session and Abstract, Dr. Margoob, IGMS Patna, working for Transport Committee. Altogether, you all have contribution which made this conference successful. I am thankful to our HOD sir. We are always work together in family. Sir, कहते हैं हम लोग साथ काम करना है. We have to live with like family. So I am thankful to our HOD sir, Professor Dr. Hariyar Dikshit, organizing committee chairman. Each under his vision, the department developed universally, as well as under his leadership, the institute runs DM clinical pharmacology and PhD course. Very few institutes having pharmacology department reach this achievement in such a short span. Professor Dr. Indu Sinha, President, Bihar Chapter IPS, Professor Dr. R.N. Sharma, ex-HOD Pharmacology, PMS Patna, Dr. Keshav Sinha, Finance Secretary, IPS Bihar Chapter, Professor NHOD Pharmacology, PMS Patna, Dr. Rani Indra Sinha, Professor NHOD Pharmacology, NMC Patna, Dr. Asa Singh, your presence and support and contribution made it successful conference. Dr. Adil Ali Sakur, Assistant Professor Pharmacology, IGMS Patna, provided memento to this conference,
in the memory of his father, Professor Dr. R.S. Sakur, and his contribution in many other aspects is also valuable. I am thankful to my senior resident, junior resident, non-teaching staff who contributed directly or indirectly is really valuable. Thanks to Superintendent Biomedical Engineer Mr. Salinder and his staff to give their valuable technical support to organize this conference. I got financial assistance from NTPC, Medanta Patholab, Lesicom Update, and thankful to them. I am thankful to Padma Shri Dr. J.K. Singh sir, and IMA ex-President IMA Dr. Sajanand sir. I am thankful to and Sahiji sir, ex-Dean IGMS Patna. I am thankful to Seti Caterer who catered the food. I am also thankful to electronic and press media for their presence and coverage of this conference and workshop. Last but not least, I am thankful to all participants, speakers, chairperson, even who joined us through online mode, and those who came here from all over the country to attend. Thank you one and all present here. We are thankful to our anchor who has spared time with us. Sir, now I request everyone to please stand at your position for national anthem. Thank you, everyone. Now I request everyone to please join us for the dinner. Same venue. At the same venue.